Hello students, in previous video we have started the revision of lesson number 5, that is birds, beaks and claws, and we were revising the different types of beaks. So some types of beaks we have already revised in previous video. Now today we will revise about the shifting beak and sticky beak. So duck have a shifting beak. It has flat and broad beak, which has small holes on both sides. You can see here, and it digs up the food along with mud. You know that when duck digs up the food, the mud also come in its mouth. So its beak pushed out the mud and water from the holes. So जो mud and water होता है वो इन होल से बाहर आ जाता है, and what is left behind is only food. So that's why its beak help it to sift food from mud and water. तो sift means छलनी, और ये छलनी की तरह ही वर्क करता है, सेपरेट कर देता है फूड को बाकी चीज़ों से. So that's why it is called sifting beak. So duck have such type of beaks. Next is your sticky beak. Swallow has a small, broad and sticky beak. Sticky means जिसमें जो किसी भी चीज में चिपक जाए, तो sticky. And so swallow, the bird that has sticky beak is a swallow, and this beak is sticky from inside. अंदर से ये sticky होती है, and this helps the swallow to catch flies while flying. So ये fly करते हुए ही insects को easily catch कर लेती है with the help of this sticky beak. So you must know the names of the birds having different types of beaks. अगर कोई type की beaks का name लेते हैं तो you must know the examples of birds having such type of beaks. And now the next thing that we revise is feet and claws. So what are claws? Claws are the long curved nails present on the feet. So claws क्या होते हैं? Long curved nails present on the feet. And claws can be used for climbing, protecting, holding food, swimming and perching. So these are the use of claws. And the feet and claws of birds are shaped to suit their perching and food habits. जैसे birds की beaks food habit पे depend करती थी, similarly the feet and claws also depend on the perching and food habits. So these are some questions which can be made from this lessons. That means extra questions. Textbook के में all तो question answers होते ही होते हैं, but there are some questions जो chapter के बीच में से भी बन जाते हैं. For example जैसे ये है कि feet and claws किस चीज़ पे depend करता है, तो it depends on the shape. Its shape depends on perching and food habits. Now so now we will discuss the different types of feet and claws of different birds. Now birds of prey. So prey तो आपको पता ही है, शिकार करने वाले, and the examples are eagle, birds and hawks. So you can see here that they have strong and sharp claws. Obviously जब किसी bird ने कोई ऐसा bird जो शिकार करता है तो उसके कैसे होंगे claws? Strong and sharp. These help them to firmly hold the prey while flying. तो fly करते हुए वो hold कर सकता है अपने शिकार को. So that's why they have very strong and sharp claws. Next is your perching birds. So perching birds means examples, the birds having perching. These types of claws: sparrows, pigeons and crows. Crows have long and slender claws with 3 toes in front and 1 at the back. So
आपको ये सारे टाइप्स के जो क्लॉज हैं उनकी शेप्स और कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए. सो दे हैव 3 toes इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. सो ये क्या करते हैं, ये कर्ल हो जाते हैं जब ये किसी भी ब्रांच और वायर पे बैठते हैं, तो उसको टाइटली पकड़ने के लिए वो ये इनके इस टाइप के क्लॉज होते हैं. तो दे कैन सिट एनीवेयर ऑन द वायर और ब्रांच. And do you know that these birds, sparrow and other perching birds, can even sleep while perching on wires or branches of trees? So you must have seen many birds sleeping on the wires many times. Now, swimming birds, the birds that can swim. So you know that ducks and penguins can swim in water. So they have webbed feet. स्विमिंग बर्ड्स के कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं. वेब्ड फीट यू कैन सी हेयर. इनके जो फीट होते हैं उनमें कैसा होता है, these birds, the front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. जो ये इनकी स्किन होती है इससे ये अटैच होते हैं इनके फ्रंट टोज, और जिससे कि ये इजीली स्विम कर पाते हैं. सो दे यूज देयर फीट एज अ पैडल एंड पुश द वाटर वाइल स्विमिंग. सो इससे पैडल करते हैं जिससे इजीली ये स्विम कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज योर वेडिंग बर्ड्स. सो क्रेन एंड जगाना हैव लॉन्ग लेग्स एंड वाइड स्प्रेडिंग टोज. सो जो इनकी लेग्स होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग लेग्स. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर they have long legs and wide spreading toes. इनकी toes कैसी होती है, फैली हुई होती है. and these help them to walk in shallow water or mud. तो ये कम गहरे पानी में और मड में इनको वॉक करने में हेल्प करती है. और यही जो वाइड स्प्रेडिंग टोज होती है इसकी वजह से ये अपनी बॉडी को गीले होने से भी बचाते हैं. So cranes and jacana, do you know cranes and jacana can walk in the mud without getting their body wet. This is called wading. So wading किसको बोलते हैं, जो अपनी बॉडी को वेट किए बगैर ही मड पे जो वॉक करते हैं, दैट इज wading. So ये डू यू नो आपने ज़रूर पढ़ने हैं. एंड इनमें से भी कई बार small questions, short questions बन जाते हैं. Now the scratching birds. Scratch, you all know the meaning of scratch. So scratching birds. Some birds like hen have a strong feet with 3 toes in front and 1 at the back. So front में 3 toes होती हैं and 1 at the back, and each toe has a sharp claw to scratch the ground. शार्प टोज होती है ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए, और जिससे वो सर्च कर पाते हैं सीड्स एंड इंसेक्ट्स को जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. सो ये भी जो चैप्टर है इसको मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, सो दैट जो क्या है इस चैप्टर में है वो आपको दोबारा से याद आ जाए. एंड इट विल हेल्प यू टू लर्न एंड रिवाइज द exercise and question answers. Now the climbing birds. Climbing, जो climb करते हैं birds like woodpecker and parrot, they have 2 toes in front and 2 at the back. So 2 toes pointing upwards and 2 downwards. And these birds can cling, ये ऐसे लटक जाते हैं, to trees to catch insects and to hold the fruits. Fruits को hold करने के लिए और इंसेक्ट्स को कैच करने के लिए ये ट्रीज पे क्लिंग हो जाते हैं, लटक जाते हैं. नाउ we thus find that nature has provided birds different types of beaks and claws. So these are as per the needs and habits of different birds. So उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उनके beaks and claws होते हैं. Now there is do you know, so first of all ornithologist
who is ऑर्निथोलॉजिस्ट. कौन होते हैं ये? अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट. सो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये बन सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, जो ये हैं ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं. सो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें इन हायर क्लासेस और इन दिस क्लास ऑल्सो, वेन एवर यू रीड द चैप्टर, रीड इट केयरफुली, और उसमें जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको ध्यान रखें. बिकॉज अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो आपके एक्सरसाइजेज में होते हैं, बट जो आपके लेसन है उसके बीच में से भी स्मॉल क्वेश्चंस बन जाते हैं. So in next video we will revise the exercise and question answers of this lesson. Thank you.